ढलाए जीवन पद्म पत्ररे ढल ढलाए जीवन मुझे क्षुद्र क्षणिक सलिल बिंदु नुहई मो महासिंधु महाजीवन पद्म पत्ररे ढल ढलाए जीवन। नमस्कार, मु शुभश्री। आपण समस्त को शारदीय दुर्गा पूजार ढेर सारा अभिनंदन। स्वागत जणे आरंभ करुछु आजिर स्वतंत्र शारदीय उपस्थापना महिमामयी नारी अस्मितार प्रतिफलन। सबुथर परी आज मध्य आम सहित जणे नुआ अतिथि जोड़ी होइछन्ति। से होउछन्ति जणे अति परिचित कंठशिल्पी, लेखिका, अध्यापिका। से होउछन्ति डॉक्टर आद्याशा दास, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तेबे चलंतु तांको आजिर कार्यक्रम को स्वागत करिबा एवं ता सहित आज आमर एही स्वतंत्र कार्यक्रम रे उपस्थापिका भाव जोड़ी होइछन्ति रिया रेशमबारी। तांको मध्य आजिर कार्यक्रम को स्वागत करूछि। Thank you Subhashri for the lovely introduction. Namaskar, my name is Riya Reshambari and today we have a renowned professor from the Indian Institute of Tourism and Travel Management, Ministry of Tourism, Government of India. Welcome ma'am to our show today. Thank you so much. Ma'am, your journey in academia has been remarkable. So would you like to tell us that how did your interest develop towards tourism and tourism studies? प्रकृतरे when I began मोर आदौ आइडिया नथिला कि पर्यटन रे मध्य गोटे पाठ्यक्रम थाए एंड सेथिरे लोक रिसर्च करि परिबे, गवेषणा करिकरी चाकरी करि परिबे। आई हैड नो आइडिया। सो मु सब बेले गोटे मेधावी छात्री थिली एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम रेवेन्शा कॉलेज। तापरे मोर पोस्ट ग्रेजुएशन मो कली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देन मो कैट एग्जामिनेशन क्लियर करके जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रो मोर एमबीए कली। देन आई डिड माय पीएचडी एंड ए सब करबा भितरे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रो गोटे जॉब बाहरिला IITTM रो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। सो आई आल्सो थॉट दैट इफ आई गो देयर व्हाट एम आई गोइंग टू टीच, कारण मु तो टूरिज्म एंड ट्रैवल विषय किसी जानि नहीं। Then I realized that this is such a beautiful course जहार प्रथम वर्षटा पूरा MBA पाठ्यक्रम and the second year is a specialization dealing with tourism subjects. So I got a job. Little did I realize that मोर जोटा सब बेले पैशन थिला जे हमर संस्कृति, हमर ऐतिह्य सब बेले मते बहुत बहुत सुंदर लगे, जे मते लगे भारत वर्ष रे जन्म नबा गोटे भाग्य। बट आई नेवर रियलाइज दैट मोर जोटा प्रोफेशन हम सेटा मध्य आ संगे जड़ित हो कारण टूरिज्म इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। से कल्चर भी रहिबो, ऐतिह्य भी रहिबो, खाद्य भी रहिबो। कल्चर माने तो सब बैकड्रॉप रहिला। पण धीरे धीरे मो जतोले मो रियलाइज कली टूरिज्म मते very भलो लागुची, कोथरे स्पेशलाइज करिबी। आई रियलाइज दैट कल्चर रे मो स्पेशलाइज करिबी। सो देन आई मूव्ड इनटू कल्चर। तापर मोर गवेषणा आरंभ होला। अनेक वर्ष गवेषणा कलापर बर्तमान बहुत छात्र छात्री मो पाखे गवेषणा करुछंती एवं एही भली भाबरे आई रीच्ड दैट स्पॉट इन माय करियर व्हिच हैज गिवन मी इमेंस सैटिस्फैक्शन. You know, while you started or even now that you've been in the industry for so long, were there any challenges that you still see in your journey? Challenges तो सब बेले रही छि। देखो पर्यटन जो जिनसटा टूरिज्म is coming of age in Odisha only now. कहना बहुत समय पर्यंत लीजर गोटे कौन लीजर रो कॉन्सेप्ट ओडिसा रे नथिला। होटल रे गोटे कौन खाइबो, होटल वर्तमान तुम देख लास्ट 10 वर्ष भितर केतेटा होटल एठी हेलानी, केतेटा नेचर कैंप्स हेलानी, केतेटा डेस्टिनेशन डेवलप हेलानी। एटा आगरु कौन थिला, लोक केबे भाबु नथिले जे साधारणतः मिडिल क्लास कहना हमर जेहेतु मिडिल क्लास टा बहुत अधिक मिडिल क्लास लोक कहते तुम जीव कहीं गोटे 6-7 हजार टका खर्च कर घर रांधवा खाइबा, सेथिरु गोटे ब्रेक नबा बा आमे गले हमको टिके भलो लागुची बा मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलबीइंग एथिपाई जे पर्यटन जरूरी ए अंडरस्टैंडिंग टा वर्तमान आसी जे। तेनो ए जो प्रोसेस रे चैलेंज आसिला। इंडस्ट्री लाइक टूरिज्म झियो मानक पई केते माने इज इट कन्वीनियंट टू प्रथम कथा मु कहिबी जे आ भितर देयर हैज बीन एन एटीट्यूडनल चेंज। बापा मांकर मध्य
attitudinal change ହେଇଛି parenting ର model ଆମର ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି that has transformed itself. ପଚାରିଲେ ଯୋଉ how many girls are interested, very happy to say that almost 50% of our classes are girls. Wow. And ସବୁଠୁ interesting ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଦେବେ ଟିକେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି, ଭାରି ହଇରାଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୁଅ ଝିଅ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। अरे वाह. Gender has lost its significance. They are hiring the resource. They are not hiring a man or a woman. In your opinion, was the most critical step that we should be taking to preserve our heritage and culture for our future generations? Yeah, so in TAC I basically joined because in the course of my research in cultural tourism, because culture and heritage go hand in hand, and they are inextricably intertwined. So ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଫୋକସ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୁରୁଣା ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲି ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଲୋକାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଉଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଣ୍ଟାକ୍ କଥା ଯେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ୱାଇ ନଟ୍ କୋଲାବୋରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟାକ୍। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟାକ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଗବେଷଣା ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ କୋ କନଭିନର ହେଲି ଇଣ୍ଟାକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର। ତାପରେ IIT ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ MOU ଆମେ କଲୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେରିଟେଜ୍ କ୍ଲବ୍ କରିଛୁ। Your passion for culture, ସେଇଟାକୁ ଟିଚିଂରେ ଆପଣ କେମିତି how do you make sure that your students have the same, they build the same passion as you? ସୋ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ପାସିଭଲି ଯଦି ପିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ଲେକ୍ଚର କରିବି ଆଉ ସେ ଶୁଣିବେ, କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କରେଇଦିଏ, ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁ, ମିଶିକି ଲେଖୁ। How did that thought occur that you have to specifically about Chaucerity Yogini? How did that happen? Because it's one of your great books. तो तारा माने केमती तारा cultural history से you must have researched a lot about it. तो तारा टिके experience जदि हमको share करिए। तो I would love to share that. And भारत वर्षरे जो बहुत विरल तंत्र मंदिर अछि ता भितर चौसठी योगिनी दुईटी ओडिसा रे अछि, गोटे बलांगीर रे और गोटे हीरापुर आमे जाइथिलु। सेही मंदिरटी छोटिया मंदिरटी ता सामना रे गोटे एमती पिंडी भलिया अछि, सेही पिंडी ऊपर गाँ मुखिया संगे बसी डिस्कशन कलु, गोटे दिन तालीम शिविर कलु, किंतु मु योगिनी मान आड़ू अनेनी से मंदिरटी कौन ता भितर किए अच्छे मु बिल्कुल देखी ना, मैंने मुझे कहूँ तुमको प्राय 12 वर्ष तलर कथा। तापरे मु आसिली एवं दिने म्यूजियम जाए मु पढ़ापढ़ी करिया को, दिने म्यूजियम रे पढ़ुतली 64 योगिनी, हठात मगली एमन कोठी देखछि गोटे बोधे, हठात सी हाउ द कनेक्शन इज, देन आई रियलाइज दैट अरे मु तो सेठी देखिदिली, बट तापरे पढ़िली बहुत मते मेस्मराइज कला कांसेप्ट। तापरे फेरिली आ सी जो फेरिली आ मोर जीवा बंद है नहीं, आई थिंक मु बोधे 1000 थर ठार ऊपर जाई सारिबेनी। तापरे मु गोटे बही लिखिछि फॉरगॉटन गॉडेसेस, जो ठाकुराणी मानकु आमे आ पूजा करूना, गाँ गंडारे से मैंने थिले तांका ना भी भूली गलेनी लोक, आउ केही जानि नांती, से गुडा गुडी के रिसर्च करके गोटे कंपाइलेशन करछि। आ सबुठार मोर प्रिय बही 64 योगिनी को ऊपर थिला मोर गोटे बुक ऑफ 64 पोएम्स, 64 जनक पई जड़े शिव मझे। तेणु शिवं को लेकिन से कौन भावती गोटे इमेजिनरी प्रोजेक्शन करके लिखी, दैट आल्सो इज अ बेस्ट सेलर। When you speak about calling and that definitely yes, it is very mystical, very very mystical. and मते बहुत जन भी कहले जो तुमको योगिनी मैंने कथा ही ना क्या देख इंडिया रे बहुत डिस्टॉर्शन थाए, पर्टिकुलरली पर्यटन क्षेत्र रे लोक मानको याडू साडू कहि कि तंत्र रो गोटे अलगा मीनिंग दे दिछंती। तंत्र इज नॉट इरोटिक, से ठाकुराणी माने इरोटिक नुहंती, कि हमर तो टिपिकली मंदिर रे देखिबो ओडिसा रे टिके जो भली भाव रे कर्वेशियस थांती स्टैच्यूज गुरा ताको से माने इरोटिसिज्म रो लेबल दियंती, बट तंत्र इज नॉट, ताको डिस्टॉर्ट करा है। अपन लेखंती यू सिंग, they your audience loved it, and because of that tourism bhi promote hela se mane asile dekhele in my own small way, but se mane asi chanti and ebe mu bartaman madhya mane department को lekhichi gote tantra circuit tiyari kariya ko je hirapur ebang amar balangir a ethi amar achi madhya baitala temple old town re
ताको कनेक्ट करके केमती गोटे सर्किट डेवलप करा माने यही देख बर्तमान वी हैव निश टूरिज्म निश रे वी हैव लेस पीपल कमिंग इन स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म बैनर रे एटा जाउची मास टूरिज्म नुहे जेमती धर तुम कहबा रिलीजियस टूरिज्म बस लोड लोक आसीबे पिलग्रिम भलिया रथ यात्रा को सेटा मो कहूनी ए माने निरोला रे आसीबे चुपचाप बसिबे टिके स्पिरिचुअल टूरिस्ट पाई अब तांको बट तंत्र यू नो रे परस्यूट से माने पूरा जानि चंती पूरा पाठ्यक्रम पढ़ी के आछंती टू मेक श्योर दैट यू नो यू इन्वॉल्व टूरिज्म इनटू योर सिंगिंग इन योर सॉन्ग्स तो तार माने सेड़ा भी गोटे कॉलिंग भाबरे ही थिला ना like a conscious effort singing was a passion in me like more when I was 4 years old only मु सेते बेले मोर सिंगिंग ट्रेनिंग आरंभ कली all thanks to my parents माने जेतोले my mother who was very observant सी देखिले जे गोटे रेडियो रे गीत बाजुची एवं मु ता संगे ताले ताले पादरे दउची ताल सो शी थॉट यार बोते टिके म्यूजिक इंक्लिनेशन रही जे 4 वर्ष बयस रे तो मो फ्रेंड माने बाहर सब खेलु थिबे सर आसकी सारे गा कला को मु पूरा रुसे सर कहते गाइबानी मु किछि ना कथा भी हुएनी चुप के बसे इसे चली गलेनी एबे किंतु तापरे मु तालीम नेची शास्त्रीय संगीत रे सो मोर आई एम सो ब्लेस्ड दैट यू नो सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स से माने मो गुरु हेचंती मोर नेक्स्ट जे क्षितिश चंद्र मैत्र को पाखर मु सिखिथिली तांको 80 वर्ष हैला मते 8 वर्ष used to get so impatient with me थारे मोर मुंडो को नेकी हारमोनियम रे बाडे देथिले इनसे जो बाडे देथिले बोले से आशीर्वाद थिला सबो जिंस माने हाउ आर यू योर वेल बीइंग आई एम you know I want to know that सेडा केमती आपण मैनेज करचंदी मु जत्ते बेले माने frankly speaking जत्ते बेले मते लागे जे बहुत हे जाउची आई एम टायर्ड I have a role model at home who is my mother सी जे एते अधिक करिचंती मोठारू मो जेते अधिक कले भी से समान नहीं परिबनी त मु भाबे जे बेसी किछि करिनी आ टिके करियो पड़िबो बट देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस जोटा कि मो क्लास रे पढ़ाए एवं मो स्वतंत्र भाबे सब बेले भाबे जे जहा पढौची सेटा मु करूची त माने आई शुड बी प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम टीचिंग सो वर्क लाइफ बैलेंस भलो भाबे मोर हुए आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली वेरी फॉर्चुनेट दैट वे माय हस्बैंड माय पेरेंट्स माय डॉटर एंड तापरे मु सब बेले भाबे जे को परसेंटेज रे कोन करिवे सेटा टू प्लानिंग मु करे when I was reading about you I understood that you also work with marginalized communities and you are focusing on their economic and educational empowerment ता बेसरे टिके कहबे कि केमिति माने you know some projects that you've worked in and about that मु तो कहिली हमें तो बहुत माने स्किलिंग प्रोग्राम्स करिछु स्किल डेवलपमेंट पाई तेनु सेथरे स्त्री लोक मानको पय अनेक कार्यक्रम करा हेछि जोठी जेमति कहली जो टेक्सटाइल ट्रेनिंग जोटा दिया गला जे टूरिस्ट आसिले हम ता से केमति कथा जिनसटा को प्रोडक्ट को केमति देखेबो बेसिक्स मैटरिंग ऑफ इंग्लिश केमति हमरो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग केमति होबो एटीट्यूड केमति रहइबो व्हाट इज यू नो मार्केटिंग प्रोडक्ट को बिकिबो केमिति हमें केमिति प्रॉफिट्स सेथरु बाहरिबो ए सब जिंस को नै कि हमें कोरापुट थारु आरंभ करी कि हमर खोरदा पर्यंत बहुत स्त्री लोकन को तालीम देइछु एवं मु देखिली ता भितरु एमिति त मैजिक स्टोरी कोठी नाही जे गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम रे मैजिकल रिजल्ट्स आसीबो ओवर एंड ओवर हबो you know you've traveled so much also and then you actively like are teaching your students about cross cultural studies तो ताकू हमें केमती माने टिके आम कॉन्शियसली आमे ताकू ता ऊपर देखि पारि ओके क्रॉस कल्चरल स्टडीज हैव बीन अ पार्ट ऑफ टूरिज्म ऑलवेज बिकॉज तक इंडिया को आमे जे देखिबा इंडिया ठो भलो एग्जांपल कोन हे परिबा बट डाइवर्स यू नो डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट तमे देखिलो कल्चरल फैब्रिक्स केते प्रत्येक स्टेट रो अलगा कल्चर प्रत्येक स्टेट रो अलगा फूड पैटर्न्स अलगा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ये सब तो टूरिज्म टूरिस्ट या से दे वांट कलर okay they want to see the spectrum of rainbow in their experiences वर्तमान रो टूरिस्ट गोटी शब्द खोजुची ऑथेंटिक राइट तमे तको देखो आगुरु कोन होतला 30 जण लोक बस रे बसथिले गाइड कोथला डाहण को अनंत लिंगराज मंदिर बां को अनंत अमुक they don't want that now they want to travel in small groups निजे ओलेबा लिंगराज मंदिर संगे घंटाटे बसिबे हमको एमिति भी देखेवारा नाही कि you know we come from a very like backward no background but रिस्पेक्टफुली आमर मत सामने रखी कि तांको हमें केमती बुझाई पारिबा से जिनसटा बहुत इंपोर्टेंट ए सब जिनस पॉसिबल हुए जोठी तमरा निजर
माटी निजर भाषा निजर संस्कृति पई निज मनरे से भक्ति थिबा दरकार भल पाइबा थिबा दरकार मु आदौ विश्वास करे नहीं जने बहुत हाईली एजुकेटेड आईवी लीग स्कूल कॉलेज रु पास करके मध्य खांटी ओडिया रे कथाबार्ता कर परिबा जोटा कि हमर लॉस वर्तमान जोटा होउची ओवर जनरेशंस मु सब बेले भाबे जे निज भाषा को जदि तमे कहि परिबा दुनिया रे जे कोनोसी भाषा को भी तमे कहि परिबा तेणु आमे जदि अलगा संस्कृति को जे सम्मान दबा प्रथमे निज माटी को निज भाषा को सम्मान दबा उचित यंग जनरेशन मानक पेरेंट्स भी तांको सेमिति ही ग्रूम करूचंदी कि पिला मानकू तांको संगे भी इंग्लिश रे कथा होचंदी सो दैट दे आर कम्युनिकेटिंग वेल एट देयर स्कूल्स बट देन इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट दैट से पिला इंग्लिश जेते भल भाबरे कहि पारिबो हिंदी हो कि ओडिया हो कि तांको नेटिव लैंग्वेज जहा हो ताको जदि से माने पेरेंट्स भी एक्टिवली सेडा टिके फोर्स करिवे पिला मानको तो देन ओनली देन जनरेशन बापा मांकर गोटे भूमिका तो निश्चय रही छी दैट गोज विदाउट सेइंग एट लीस्ट टिल द चाइल्ड इज एन एडोलेसेंट डेफिनेटली रोल रही छी एंड देन टुडे दैट इज द रीजन व्हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स कॉलेजेस दे बिलीव इन द कांसेप्ट ऑफ होलिस्टिक पेरेंटिंग वेयर टीचर्स का सहित पेरेंट्स एकाठी बसी करी पिलार भविष्य भाबिबे किंतु बियॉन्ड पॉइंट पिलार मनरे से इंटरनलाइज करिया दरकार एंड इंटरनलाइजेशन प्रोसेस रे तार ग्रोइंग अप इयर्स चाइल्डहुड मैटर्स अ लॉट चाइल्डहुड रे बापा मां कर व्यक्तित्व सेमानकर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टुवर्ड्स ईच अदर घरे कोन थिला लैंग्वेज कोन बही बापा मां पढुथिले कि नै बहुत घरे पढिबाटा नाही संस्कृति रो अर्थ कोन कोमति केमति कोन खांती से माने केमिति बढ़ंती सब जिनसर प्रभाव व्यक्तित्व पर बापा मां कर भूमिका बहुत एवं तापरे आसिला टीचर टूरिज्म डे तो माने जेमती लोक माने करंती कि वन डे रे सेलिब्रेट कर देबे बट देन ताको पूरा गोटे वीक ने कि आउ काइना योर कॉलेज इज वन ऑफ अ काइंड आउ कोठी भी एमती माने टूरिज्म रहते डेडिकेटेड कॉलेज नाही तो केमिति ताको वन वीक रे सेलिब्रेट करी कि तारो इंपोर्टेंस आपण ताको केमती बुझौचंती तार बेसिक देखो वर्ल्ड टूरिज्म डे जोटा हमर अछि ऑन 27th ऑफ दिस मंथ तार गोटे थीम थाए सब वर्ष तेणु एथरक थीम इज टूरिज्म एंड पीस सो सेटा सही कॉन्सेप्ट को आमे पिला मानक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित लिंक करी दो तेणु जो जिनस गुड़ा नॉर्मल केस रे हुए एथरक थीम बेस्ड ही जाए सो यू हैव अ हेरिटेज क्लब गोटे हेरिटेज वॉक अच्छे हमर एथरक से माने जे हेरिटेज सनसेट टेम्पल ट्रेल तना पिला सब करचंती सनसेट रे से माने जिबे सेट स्टोरी टेलिंग करिवे मंदिर देखिबे कारण हमर बाहर पिला भी बहुत अच्छंती एंड देन वी आर ट्रेनिंग देम टू डू द हेरिटेज वॉक्स कल सकाळे से माने करिवे मैम विथ दैट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई लव्ड it was so much of a enriching experience for me because it's not just tourism but then again I think I will go back and look for Chaucer yoginis and research about them. I'll do my own research. So thank you ma'am for your time and for just your presence, your beautiful presence. Thank you so much. It was wonderful to talk to you and also I feel that your questions led me into a path of introspection, so it was very very enjoyable experience. Thank you ma'am, thank you so much. Thank you. आशा करुछि आपण समस्त को आज रही स्वतंत्र अध्यायटी खूब नियारा एवं मन को छुई थिबो। आज रही अध्याय रे आम सहित अतिथि भाबरे जोड़ी हिथिले डॉक्टर आद्याशा दास एवं उपस्थापना करुथिले रिया रेशमबारी। थैंक यू सो मच मैम आमर ही विशेष कार्यक्रम रे जोड़ी हिथिबारु। वर्तमान तो समय हेलानी आज अतिथि को विदाय देवा ता सहित कार्यक्रम को एठी समाप्ति करिबा किंतु समाप्ति करिबा पूर्वरु गोटे कथा कहि रखिबाकू चाहिबी माँ दुर्गा कृपारु आपण समस्तक जीवन रे सुख शांति भरी जाऊ जहाँ किछि स्वप्न अछि से सब को पूरा करंतु जेते जहाँ बाधा विघ्न आसुछि से सब को सही निज अंटा को सलख करी छिड़ा हवा शिखंतु आउ आगो को बढ़ंतु देखिबे आपणक जीवनटा केते सुंदर हे जिवो। विदाय नहीं रहुछि नमस्कार।